element. Chemical properties of 15 elements. तो 15 एलिमेंट में फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं. क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कंसिडर. नाइट्रोजन दिस एग्जांपल द एटॉमिक नंबर इज 7, 1s2 2s2 and 2p3. s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो अनपेयरिंग नहीं कर सकता मैं यहाँ पे. तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 मिल सकता है और कोवेलेंसी ऑफ n विल बी इक्वल टू एट मोस्ट 4. Elements of this group generally show +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके अलावा और भी हो सकते हैं. इन जनरल ये +3 +5 दिखाएगा. जैसे यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड्स बनते तो +3 हो सकता है. एंड नाइट्रोजन विल हैव a maximum covalency of नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है बट वो बॉन्ड्स सिर्फ 4 बना सकता है. बाकी सब में कैसा ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो रहा है और वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है. फास्फोरस में ऐसे हो तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15. इसका एलिमेंट होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3. तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स. बट थर्ड ऑर्बिट में अपने पास d भी अवेलेबल है तो अनपेयरिंग हो सकती है. सेकंड में d अवेलेबल नहीं था, वहां अनपेयरिंग नहीं कर पाते. तो यहाँ जब अनपेयरिंग होगा तो 1 और यहाँ पे 1 2 3 और d वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन. तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही हो सकता है बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकता है. Other elements of the group can form more than 4 bonds. फास्फोरस में से BF6 माइनस भी हो सकता है. 6 बॉन्ड्स भी बन सकते हैं. 6 बॉन्ड इसलिए बन पाए बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. अपना इलेक्ट्रॉन ये बटॉन से एक्सेप्ट कर पाएगा तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है. ये लिख लो पहले. तो हर ग्रुप में सेम करना है. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखो. अनपेयरिंग हो सकती है. क्या अनपेयरिंग होगी तो एटमॉस्फेयर कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं वो देखेंगे और फिर उसके हिसाब से उसके बॉन्डिंग और रिएक्शंस. अब ऑक्साइड जैसे बनेगा वो 3 या प्लस टाइप में बना सकते हैं. n के वैसे और भी ऑक्साइड्स हैं तो +1 में भी बनता है +2 में भी बनता है. इन जनरल वैल्यू एटलीस्ट वी ट्राई की मेन वाला जो पार्ट है वो कवर कर तो कंपाउंड्स सच भी करने टेस्ट कर 28 वाला. मतलब अगले वीक का टाइम है अपने पास. अच्छा से कवर हो जाएगा. इनऑर्गेनिक पे तुम्हारा एस ब्लॉक हाइड्रोजन बचा उतना बी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ हो गया, रोटेशन हो गया, क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग हो चुका है. एक जैसे जो क्वेश्चंस को हो जाएंगे फिर सॉल्ट एनालिसिस सीखते हैं. एस ब्लॉक हाइड्रोजन ठीक है.
ये हो गया। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में -3 भी लिख लो वैसे, नॉन मेटल से तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, स्पेशली जो ऊपर वाला एलिमेंट है N। सो -3 + 3n + 5, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर पाएगा वो, या फिर शेयर भी कर सकता है, दोनों ऑप्शंस। तो -3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, या टेंडेंसी क्या होगी उसकी, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज, +3 इंक्रीज होगा, -3 का डिक्रीज हो जाएगा। मेटलिक नेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं, वो लूज कर सकता है उस केस में। तो पॉइंट लिखो इसमें, the tendency to exhibit -3 oxidation state, the tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group, due to increase in size and metallic character, due to increase in size and metallic character. Next one, stability of +5 oxidation state. Stability of +5 oxidation state decreases down the group. Stability of +5 oxidation state decreases down the group due to inert pair effect. Due to inert pair effect. For Bi, Bi 5 is the only, for Bi F5 is the only, Bi F5 is the only well characterized compound. For Bi F5 is the only well characterized compound in +5 oxidation state. In +5 oxidation state. The next point, nitrogen also exhibits +1 +4. Nitrogen also exhibits +1 +4, +1 +4 +2, +1 +4 +2 oxidation state. When it reacts with oxygen. When it reacts with oxygen. When it reacts with oxygen. Next, phosphorus can show +1 and +4 oxidation state. Phosphorus can show +1 and +4 oxidation state in oxoacids. Next point, in nitrogen, all oxidation states from +1 to +4. In nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. Tends to
disproportionate in acid solution. ये एक important point रहेगा oxidation number वाले part से. Tends to disproportionate in acid solution. तो इसमें जैसे अगर हम लोगों ने HNO2 लिया, HNO2 क्या होगा? It will change to HNO3 plus NO plus H2O. तो HNO2 में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3. HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और NO में ऑक्सीडेशन नंबर +2. तो +3 से +5 is oxidation and +3 से +2 is reduction. तो HNO2 क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है नाइट्रस एसिड. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी HNO2 का रिक्वायरमेंट होगा तो हमेशा HNO2 इन situ क्रिएट करते हैं. जब रिक्वायर्ड होता है उस समय ही क्रिएट करते हैं बाय एडिंग NaNO2 and HCl. तो इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज HNO2 स्टेबल नहीं है, ऑन स्टैंडिंग के ब्रेक डाउन कर जाएगा. whereas HNO3 जब रिक्वायर्ड होता है तो सिंपली HNO3 ऐड करते हैं. So due to this reason only, HNO2 is created in situ. By reacting NaNO2 and HCl. In organic chemistry. अगर कुछ स्टेबल रहे तो फिर वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फिर तुम्हें क्रिएट नहीं करना पड़ता है इनसे. तो नहीं स्टेबल है वो क्रिएट करना पड़ेगा. रिएक्शन. अब इसमें क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में? इंटीजर टाइप में अगर जेईई में ये क्वेश्चन रहता है तो ऐसा दे सकते हैं दैट HNO2 on disproportionation forms an oxide of N और ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, या उस ऑक्साइड का ओके नंबर्स कितने हैं बताओ. ये पूछ सकते हैं क्योंकि N के बहुत सारे ऑक्साइड से हर अलग केस में वो क्रिएट होता है. तो यहाँ कौन सा ऑक्साइड बना वो चेक करते हैं. फिर वही सॉल्ट एनालिसिस अगर होता तो सॉल्ट एनालिसिस में NO2 माइनस रहा या फिर NO3 माइनस रहा, दोनों में ऑक्साइड जो बनता है वो NO2 बनता है. वो डिफरेंट ऑक्साइड है. HNO3 का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर रिएक्शन हुआ विद कॉपर तो अलग ऑक्साइड बनेगा, डाइल्यूट में हुआ तो अलग ऑक्साइड बनेगा. वो बेस क्वेश्चंस में सर. Next, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states. In case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3, disproportionate into +5 and -3
both in alkali and acid. Both in alkali and acid. Both in alkali and acid. Next point. However, +3 oxidation state. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony, and bismuth. +3 oxidation state in case of arsenic, antimony, and bismuth becomes increasingly stable. With respect to disproportionation. Becomes increasingly stable with respect to disproportionation. Becomes increasingly stable with respect to disproportionation. ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया. नेक्स्ट फिर इसमें लिखो एनालिस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज एनालिस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. एनालिस प्रॉपर्टी का रीजन क्या है? सेम स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. वो कॉमन रहेगा तो बार बार नहीं लिखना. First point लिखो इसमें, it can form p by multiple bond. It can form p by multiple bond with itself and other atoms with small size and high electronegativity carbon and oxygen लिखेंगे दोनों ब्रैकेट में. कार्बन एंड ऑक्सीजन. बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के वो p5 बॉन्ड नहीं बना पाएंगे. क्यों नहीं फॉर्म कर पाएंगे? रीजन में लिखे ऑर्बिटल्स डिफ्यूज है बहुत ज्यादा, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता है. सिंस NN के बीच में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, वो डायटोमिक स्पीशीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. बाकी के एलिमेंट जो वो क्या करे, सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट करे. तो जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4. अब P4 के भी अलग-अलग टाइप्स हैं. रेड फास्फोरस हो सकता है या व्हाइट फास्फोरस हो सकता है. मोस्ट एक्टिव इज व्हाइट फास्फोरस. तो व्हाइट, रेड, ब्लैक ऐसा रहेगा. तो उसको हीट करेंगे तो उसके वो ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं. उनकी स्टेबिलिटी अलग-अलग है, एंगुलर स्ट्रेन है. तो N के फॉर्म में सिर्फ डायटोमिक है और किसी में फिर डायटोमिक स्पीशीज नहीं रहता, क्योंकि डायटोमिक होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना पड़ेगा. फिर p5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो सिर्फ इसमें हो पा रहा है और इसमें नहीं हो पा रहा है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि N का जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज वीकर देन pp बॉन्ड. फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑल्दो हाइयर है बट स्ट्रेंथ इज लोअर. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज़ N का स्मॉल साइज होने के चलते उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज आ जाते हैं और हाई रिपल्शन करते हैं. तो हाई रिपल्शन के चलते वो इजीली ब्रेक हो पाता है. तो स्टेटमेंट लिखो, NN single bond is weaker than NN single bond is weaker than single PP bond is weaker than single PP bond because of high interelectronic repulsion of the non-bonding electrons
because of high interelectronic repulsion of the non-coordinate electrons due to small bond length. Due to small bond length, due to small bond length, next one, nitrogen cannot form. Nitrogen cannot form B pi bond. Nitrogen cannot form B pi bond as the heavier elements. As the heavier elements phosphorus and arsenic can also form. Phosphorus and arsenic can also form D pi bond. Phosphorus and arsenic can also form D pi bond. जैसे phosphorus के एग्जांपल को देखते हैं, N के पास तो अपने पास d ऑर्बिटल नहीं है। जैसे मान लो अगर तुमने HNO3 लिया, तो HNO3 में N का अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन करेंगे, H will be equal to half, valence electron is 5, monovalent atom 1, minus 0 plus 0, तो 6 का हाफ हो गया 3, which is sp2 hybridization। ये बना sp2 का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अपने पास 3 प्लेसेस बने और अपने पास एटम्स 4 हैं, तो रूल ये कहता था कि पहले उनको रखो जिसके एक से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, तो पहले ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे। देन एक हाइड्रोजन बचा, किसी एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब N का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेक करो, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, बट N कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, एट मोस्ट 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो N का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था लास्ट में, दैट वाज 2s2n 2p3। S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन फिर हुआ है sp2। तो अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक पेयर और 2 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड वाली क्या बनाएंगे, कोवैलेंट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट। प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनता था, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। Unhybridized atomic orbital will form pi. तो N can form 3 sigma bonds, 1 pi bond। 3 sigma bond जो बने उसमें से 2 क्या बने, कोवैलेंट, और एक क्या बना, कोऑर्डिनेट। तो कोवैलेंट वाले ये दोनों ले लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको मानो। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, फिर 3 पेयर्स आ गए। इस ऑक्सीजन में कोवैलेंट बॉन्ड 2 बनाए, तो इसके पास 2 पेयर्स बचे, और N एक और बॉन्ड बना सकता है which will be a pi bond। तो एक pi bond यहाँ पे दे दो, HNO3 का स्ट्रक्चर मिल गया। इसी केस में फिर इसमें फॉर्मल चार्जेस क्या होंगे, वो आ सकते थे। तो फॉर्मल चार्ज अगर ऑक्सीजन का चेक करेंगे, फॉर्मल चार्जेस बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, और 2 बॉन्ड बने तो उसमें इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4। तो 6 minus 4 minus half of 4, that is 0। फॉर्मल चार्ज इस पे हो गया 0। फॉर्मल चार्ज इसका चेक करते हैं, 6 minus half of 2, that is -1। फॉर्मल चार्ज इसका देख लो, 6 minus 4 minus half of 4, 0। and formal charge for N will be, valence electron is 5, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसके पास, और बॉन्ड इसने बनाया 4, 1 2 3 and 4।
So -0 and minus half of 8. तो फॉर्मल चार्ज n पे कितना है इसमें +1. तो फॉर्मल चार्ज अगर पूछता तो वो ऐसा आंसर कर पाते हैं. तो n+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बट बॉन्ड इसने सिर्फ 4 ही बनाए हैं. उस 4 बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड बने उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो. ये लिख सकते हो आप. देन हम आते हैं H3PO4 में. मान लो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. H will be equal to half. Valence electron is 5. Monovalent atoms 3. -0 and +0. 8 का हाफ हो गया 4 which is sp3. तो phosphorus 1 2 3 4 चार प्लेसेस. अपने पास एटम सभी 4 + 3 7. तो पहले ऑप्शन को प्लेस करेंगे एंड फॉस्फोरस का अगर देखें हम लोग आउटर मोस्ट में दैट इज 3s2n 3p3. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल का एक्सेस है. 5 अनपेयर्ड हो गए. हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला sp3. तो a s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर दिए. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना 1 2 3 4 और ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. तो चार बॉन्ड्स क्या बनेंगे सिग्मा और एक क्या बनेगा पाई. सिग्मा बॉन्ड्स 4 बन गए. एक पाई बॉन्ड बना. इलेक्ट्रॉन 2. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. अब अपने पास हाइड्रोजन है 3. तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो सबसे. सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ इस केस में जो पाई बॉन्ड बना तो p का ऑर्बिटल यूज क्या किया हम लोगों ने d. और ऑक्सीजन के पास 2 ही ऑर्बिटल है s और p. और पाई बॉन्ड किससे बन सकता है p से बन सकता है. तो पाई बॉन्ड इन केस ऑफ H3PO4 इज d पाई p पाई. ये बॉन्ड बन रहा है. बट HNO3 में जब आएंगे तो p के पास जो ऑर्बिटल था वो भी p था और O के पास जो ऑर्बिटल था वो भी p था. तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज p पाई बॉन्ड. ये बनाओ. तो इन सब इंफॉर्मेशन में से कुछ भी आ सकता है. पूरा ब्रेक डाउन करने ऐसा तुम्हें आना चाहिए. और ये बॉन्डिंग में किया है कितना याद है यश इसमें से देखना पड़ेगा. हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं. स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं. नेचर ऑफ पाई बॉन्ड आ सकता है. फॉर्मल चार्ज पूछ सकते हैं एटम्स पे. इलेक्ट्रॉनिकल प्रिंट लिखोगे तो उसको ब्रेक करके अंडरस्टैंड कर पाओगे बॉन्ड कितने बन सकते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या रहेंगे.
Okay. Next प्रश्न लिखो reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. पहला स्टेटमेंट लिखो all elements of this group. All elements of this group all elements of this group form hydrides of their type EH3 और सारे एलिमेंट्स बनाएंगे NPAs SPBA all will be there EH3 क्वेश्चन इस पे बहुत बार आता है हाइड्राइड की स्टेबिलिटी आ सकती है रिड्यूसिंग बिहेवियर आ सकता है बेसिक नेचर आ सकता है तो उसके ऑर्डर्स पता होना चाहिए फर्स्ट लिखो stability of hydrides decreases from NH3 to BiH3 stability of hydrides decreases from NH3 to BiH3 reducing nature increases from NH3 to BiH3 reducing nature increases from NH3 to BiH3 basicity decreases from NH3 to BiH3 basicity decreases from NH3 to BiH3 तो इसमें टेबल भी वैल्यूज हैं उस पर कुछ देख सकते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स याद है क्या होते थे फॉस्फोरस के हाइड्रेट्स का एंगल जो है टुवर्ड्स 90 डिग्री होता है क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन का एनर्जी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का
hydrides of group 15 and 16 except for H2 and NH3 उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता है और ये हमें कैसे पता है बिकॉज एंगल जो होता है दैट इज वेरी क्लोज टू 90 बट H2 और NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली जो एंगल्स आने चाहिए थे वो मिलते हैं so let's look at properties of hydrides of group 15 element NH3 PH3 ASH3 SPH3 and BAH3 boiling point एक लिखेंगे इसका HEH angle bond association enthalpy और bond length chords to वैसे रखेंगे ये देखो बैलेंस के स्ट्रेट करना है मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी दिए हुए जस्ट पॉइंट हो गया वैल्यूज लिखो फिर इसका बॉलिंग पॉइंट में लिखो पहले NH3 का 238.5 PH3 का 185.5 ASH3 210.6 SPH3 254.6 and BAH3 290 BAH3 290 बॉलिंग पॉइंट का वैसे जनरल ऑर्डर ये होना चाहिए कि डाउन द रूट को इंक्रीज करेगा जैसे जैसे एटम इंक्रीज होगा सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा बट NH3 का काफी हाई वैल्यू मिल रहा है ये थोड़ा हाईएस्ट वैल्यू तो NH3 का वैल्यू हाई होता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकता है बट स्टिल इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर तो सर बेसिकली the next HH angle है bond angle इसको डिग्रीज में 107.8 डिग्री
for NH3 107.8 degree, pH 3 का 93.6 degree, ASH3 91.8 degree, SPH3 91.3 degree. ये S3 का वैल्यू नहीं है बिकॉज वो आयनिक हो जाएगा, तो आयनिक हो गया तो उसमें फिर एंगल्स नहीं है, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. Then फिर bond dissociation enthalpy का bond dissociation enthalpy NH3 का 389, NH3 का 389, PH3 322, ASH3 297, SPH3 255, SPH3 255 और BH3 का वैल्यू नहीं है. यहाँ से ये है तो नहीं पड़ा है. Then bond length देखो, NH3 का 101.7, PH3 141.9, ASH3 151.9 and SPH3 170.3, 170.7, SPH3 170.7. BH3 का भी हमारे लिए नहीं है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर देखो यहाँ पे डाउन द रूट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसका जितना हायर होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसलिए वैसा था और रिड्यूसिंग बिहेवियर उसका अपोजिट था. जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है वो आराम से दे पाएगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर हाईएस्ट हो जाएगा. रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द रूट इंक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर डाउन द रूट डिक्रीज करेगा बिकॉज स्मॉल साइज रहा तो इफेक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा अपना, और स्टेबिलिटी डाउन द रूट डिक्रीज करेगा. ये तीन ऑर्डर्स इसमें याद रखोगे हाइड्राइड्स के लिए. नेक्स्ट देखो फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. Next heading, reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen. Elements of this group form oxides of the type. Elements of this group form oxides of the type E2O3 and E2O5. Elements of this group form oxides of the type E2O3 and E2O5. तो E2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ E is +3, E2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर is +5. कोवेलेंट बिहेवियर हाईएस्ट इसमें होगा E2O5 में, एसिडिक बिहेवियर हाई इसमें होगा E2O5. E2O3 and E2O5. अगला पॉइंट इसमें लिखो, ऑक्साइड with higher oxidation number. Oxide with higher oxidation number will be more acidic. Oxide with higher oxidation number will be more acidic than that of lower oxidation state. The next point, acidic character of oxides. Acidic character of the oxides decreases down the group. Acidic character of the oxides decreases down the group. Next point, oxides of the type E2O3. Oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus. Oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. Of
nitrogen and phosphorus are purely acidic. That of arsenic and antimony. That of arsenic and antimony are infiltrate. That of arsenic and antimony are infiltrate. And that of bismuth will be predominantly basic. That of bismuth will be predominantly basic. Predominantly basic. तो E2O3 के जो ऑक्साइड्स बने N और P के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं, AS और SP का जो है वो इम्पोर्टेंट और VI का जो रहेगा वो बेसिक. नेक्स्ट फिर देखो reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. इसमें लिखो elements of this group. Elements of this group form halides of the type. Elements of this group form halides of the type EX3 and EX5. EX3 and EX5. Bracket में लिखो nitrogen does not form pentahalide. Nitrogen does not form pentahalide due to unavailability of d orbitals. Nitrogen does not form pentahalide due to unavailability of d orbitals. Next point, pentahalides are more covalent than trihalides. Pentahalides are more covalent than trihalides. Next point, for nitrogen, only NF3 is known to be stable. For nitrogen, only NF3 is known to be stable. Whereas all the trihalides for other elements are stable. All the trihalides for other elements are stable. Other element मतलब इस group के other elements जो other elements are stable. The next point, trihalides except BiF3 are covalent in nature. Trihalides except BiF3 are covalent in nature. कोवेलेंट लिगेंड जो है वो सिर्फ अपने पास सबके पास रहेगा, BiF3 के पास नहीं है, वो तुम्हारा आयनिक हो जाएगा. तो ये ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है that BiF3 is ionic in nature. ट्रू और फॉल्स भी राइट स्टेटमेंट है. उसके साथ एक और कोई इसी ग्रुप का और स्टेटमेंट डाल देंगे n can form only 4 bonds, ऐसा कुछ नहीं है. या बेसिक नेचर will be highest for NH3 in its group. तो वो अच्छा. Next we'll लिखो reactivity with metals. Reactivity with metals. Reactivity with metals. इसमें statement all the elements of this group reacts with metal
reacts with metal. Reacts with metal to form binary compounds. Reacts to form binary compounds exhibiting -3 oxidation state. Exhibiting -3 oxidation states. उसमें कुछ compounds हो गए. Exhibiting -3 oxidation state. This is CA3N2 हो गया. This is calcium nitride. Valencies का 2 इसका 3 exchange कर दिया. Similarly CA3P2 हो सकता है. Calcium phosphide. Then Na3S. Sorry, not Na3S. Na3As. Sodium arsenide. Then Zn2Sb, Zn3Sb2, zinc antimonide, and then Na2Bi3, magnesium, bismuthide. सारे कंपाउंड से बनाएंगे सारे एलिमेंट्स. तो 15 ग्रुप इसके साथ हो गया होगा. प्रॉपर्टीज चाहिए. मुझे वाला डॉक्यूमेंट Mg3 होना चाहिए. G का +2 है, Bi का 3 -2. Mg3 एनसीईआरटी में जो आर्सेनाइड वाले ने वो राउंड किया हुआ था, उन्होंने उसको भी 2-3 कर दिया. Na3 और As2 कर दिया, बट Na का +1 ही है, तो सिर्फ Na3 As होना चाहिए. लिखेंगे नेक्स्ट 16 properties of 16 element. इसका भी पहले ऑक्सीडेशन नंबर एक बार देख लेते हैं.
physical properties of fluid 16 elements. First one is oxidation state. So elements of this group generally show -2, +2, +4, and +6 oxidation state. तो जिससे ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ, 1s2, 2s2n, 2p4, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, इसके पास d ऑर्बिटल है भी नहीं, तो एक्सपैंड नहीं कर सकता है। सल्फर के पास ऑल्दो जब जाओगे तो वहां पे एक्सपेंशन हो सकता है। सल्फर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2n, 3p4। फर्स्ट एक्साइटेशन करो उसमें, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सल्फर कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन वाइज जाओगे तो sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है, या sp3d2 हो सकता है। ऑक्सीजन में हम लोग हमेशा sp3 चेक कर रहे हैं। ये देखो पहले तो कौन से क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग वाला पार्ट अगर क्लियर है तो ये उतना टफ नहीं रहता, रिलेटिवली इजी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन इस क्वेश्चन का मतलब जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको हटा कर उन्होंने इजी कर दिया है, वो इतना याद करना पड़ता था, उससे एक क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें electronegativity of, since the electronegativity of oxygen is very high, since the electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state. It shows only negative oxidation state.
as -2, as -2, except for OF2, where its oxidation state is +2, where its oxidation state is +2. Next, sulfur, selenium, and tellurium, SSEnt usually show +4 oxidation state, in their compounds with oxygen, and +6 oxidation state, in their compounds with fluorine, with fluorine, in their compounds with fluorine. Next point, bonding in +4 and +6 oxidation state, bonding in +4 and +6 oxidation state is mainly covalent, तो उसका एनालिसिस पीरियड कुछ डिफरेंट वैसा अलग सा नहीं है पॉइंट, उसमें पहले लिखा है कि उसके 4 बॉन्ड्स बन पाएंगे, वो ऑलरेडी क्लियर है अपने पास. रीजन क्या है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ऑल दैट पॉइंट यू हैव डन. नेक्स्ट लिखो फिर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट मतलब फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया. सेकंड रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. Reactivity with hydrogen. तो इसमें लिखो all elements of group 16. All elements of group 16 form hydrides of the type. All elements of group 16 form hydrides of the type H2E. 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 Next one. Acidic nature of these hydrides. Acidic nature of these hydrides increases from H2O to H2PE. Increases from H2O to H2PE. So in सब में से H2 is least acidic and H2P is most acidic. H2P. Next, thermal stability of hydrides. Decreases from H2O to H2PO. Decreases from H2O to H2PO. H2O to H2PO. And all the hydrides except water. Next point. All the hydrides except water possess reducing property.
And this character increases from H2S2 H2P H2S2 H2P. तो इसमें भी तीन प्रॉपर्टीज है, स्टेबिलिटी है, एसिडिक नेचर है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर है. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइडेशन बुक 16. ट्राइगो कंपाउंड इसमें भी आएंगे, H2O के अलावा जो रहेंगे तो उसका एंगल भी 90 के क्लोज होना चाहिए. चारों पॉइंट्स इसके लिए लिखे जो लास्ट ग्रुप के लिए कहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्डिंग. जो भी ट्रेंड्स लिख रहे हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ट्रेंड्स पता होना चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, उससे लिख करके इंफॉर्मेशन आ सकता है. और कोई बहुत स्पेसिफिक चीज जैसे नेगेटिविटी हो गया तो समटाइम्स जो वो क्वेश्चन पूछा वो दे सकते हैं, बट ट्रेंड्स फिर भी रहेगा तो आइडिया एक हो जाएगा क्या है. पहला पॉइंट है बॉन्ड लेंथ का. बॉन्ड लेंथ में लिखो 96 for H2O, 96 for H2O, 134 for H2S, 146 for H2SC, and 169 for H2T. तो वैसे भी डाउन द ग्रुप जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके कंपाउंड का भी साइज इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में. देन नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में H2O का 373, H2S का 213, H2SC का 232 एंड H2P का 269. तो यहाँ पे सब में से बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका, H2O का. रीजन इज अगेन H बॉन्डिंग, और यहाँ H बॉन्डिंग इनफैक्ट NH3 से भी स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग हो रहा है, चार्ज डिफरेंस साइड रहेगा. देन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी. H2O का 463, H2S का 347, H2SC का 276, H2T का 238. देन बॉन्ड एंगल H2O में 104, H2S
92, H2SC 91, and H2PE 90. H2PE. So next we go reactivity with oxygen. Reactivity with oxygen. First point, all these elements, the elements of this group form oxides. Elements of this group form oxides of the type. Oxides of the type EO2 and EO3. Elements of this group form oxides of the type EO2 and EO3. Where E is equal to S, Sc, Te and Po. S, Sc, Te and Po. ऑप्शन में भी ओजोन बनेगा बट उसको O2 नहीं लिखेंगे, इट विल बी सिंपली स्टेटेड एज O3. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस. O3 and SO2 are gases. O2 and SO2, not SO3. O2 and O3 and SO2 are gases, while SiO2 is solid. While SiO2 is solid. Next point, reducing property of dioxide. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to PeO2. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to PeO2. PeO2. उसी में ब्रैकेट पे लिख लो, SO2 is reducing. SO2 is reducing while PeO2 is oxidizing. While PeO2 is oxidizing. Next point, S, Sc and Te also form. S, Sc and Te also form EO3 type oxides. EO3 type oxides. EO3 type oxides, and both the type of oxides are acidic in nature. And both the type of oxides are acidic in nature. मतलब O2 और O3 दोनों ऑक्साइड्स ही एसिडिक रहेंगे. मोर एसिडिक कौन होगा? O3 टाइप का हायर ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसमें कोई एम्फोटेरिक फीचर नहीं है, होगा एसिडिक इन नेचर और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला और ज्यादा एसिडिक होता है. इनफैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड जब क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, SO2 था, SO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं प्रेजेंस ऑफ B2O5, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया वहां पे. B2O5 का बिहेवियर कैसा था? मेनली एसिडिक था, दो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है. ठीक है, तो ऑक्साइड ऑक्साइड के सभी स्टेटमेंट में लिंक हो सकते हैं. SO3 बनेगा, फिर SO3 गैस को हम लोग यहाँ से पास कराते हैं, उसमें ऊपर से H2SO4 ड्रिफ्ट करते हैं. तो H2SO4 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, SO3 ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इंटरमिक्स होगा, उससे ओलियम बनता है. तो ओलियम बना और फिर ओलियम ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं. ओलियम में बाद में H2 ऐड करके H2SO4 क्रिएट करते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड जब फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एग्जैक्टली नहीं बन रहा, ओलियम बन रहा है. लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या चैप्टर 1 में 104.5% H2SO4 अगर रहा, उसका मतलब क्या है?
104.5% H2SO4 अगर है लेवल, इसका मतलब है कि ओलियम का अगर 100 ग्राम लिया तो इट कैन क्रिएट 104.5 ग्राम ऑफ H2SO4. तो 4.5 ग्राम उसमें H2 ऐड होता था, SO3 प्लस H2O फॉर्म्स H2SO. तो ऐसा कुछ लिंक करके हो सकता है. नेक्स्ट देखो फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. Reactivity towards halogens. Elements of group 16. Elements of group 16 form halides of the type. Elements of group 16 form halides of the type EX2 form halides of the type EX2, EX4 and EX6. EX2, EX4 and EX6. EX6. Next point. Stability of halides decreases in the order. Stability of halides decreases in the order F minus, Cl minus, Br minus and I minus. Stability of halides decreases in the order F minus, Cl minus, Br minus, I minus. So F minus the stability highest or I minus the stability lowest. Decreasing order. The next point. Among hexahalides, hexafluorides are the only stable halides. Hexafluorides are the only stable halides. Bracket में they are gaseous in nature. They are gaseous in nature. The next point. Among tetrafluorides, SF4 is a gas. SF4 is a gas. SCF4 liquid. SCF4 liquid and TF4 a solid. TF4 solid. Geometry वगैरह hybridization इसका check करते हैं. Next point लिखो. All elements except oxygen. All elements except oxygen form dichlorides and dibromides. Form dichloride and dibromides. Next one. Some well-known monohalides. Some well-known monohalides. अगला point है. Some well-known monohalides are dimeric in nature. Are dimeric in nature. For example, S2F2, S2F2, S2Cl2, S2Br2, Sc2Cl2, Sc2Cl2, Sc2Br2, Sc2Br2. These dimeric halides undergo disproportionation. These dimeric halides undergo disproportionation.
जैसे Sc2Cl2 है ना, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। Sc2Cl2 will form AcCl4 and Ac। तो Ac का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4 और यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो +1 से +4 इज ऑक्सीडेशन एंड +1 to 0 इज रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में देखो, ज्योमेट्री जब पूछते हैं, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, ठीक है, और शेप अगर पूछा तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल H2, ज्योमेट्री उसका क्या होगा? वो टेट्राहेड्रल ही है। शेप कैसा है? बेंट और पी शेप है। तो वो क्या पूछ रहे हैं उसके साथ आंसर करोगे। Rigidity, hybridization and shape. SF2, SF4 and SF6, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालो, शेप ड्रॉ करो और उसका नेगेटिव फॉर्म। मॉडल में किया है, रिवाइज में देखते हैं। ग्रुप फिर हो जाएगा इसके साथ। 17 और 18 बचे। तब तक ये फिर पढ़ते रहो, उसको याद हो इसमें से। क्या है डैश वाला? SF2 के केस में चेक करेंगे तो सल्फर का H हाफ 6 + 2 - 0 + 0 8 का हाफ हो गया 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 प्लेसेस अपने पास और 2 एटम्स, तो 2 क्या आएंगे? लोन पेयर। तो जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, हाईएस्ट एंगल और एक्सेल और एनीवेयर ऐसा प्लेस कर देते। इसमें कोई हाईएस्ट एंगल है नहीं, दे आर फ्री टू प्लेस इट एनीवेयर। किसी 2 पे लोन पेयर और बाकी 2 पे एटम्स। शेप क्या होगा? बेंट और वी शेप और एंगुलर। देन SF4 का चेक करेंगे, H will be equal to half 6 + 4 - 0 + 0, 10 का हाफ आ गया 5, which is sp3d। क्या शेप होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ट्रायंगल बाइपिरामिडल होना चाहिए। तो 5 प्लेसेस और एटम्स 4 है, तो एक लोन पेयर आएगा। लोन पेयर हाईएस्ट एंगल पे प्लेस करो, तो प्लेन में जो बॉन्ड बने उसके एंगल कितने हैं? 120 है। तो इन तीनों में से किसी भी एक पे प्लेस कर सकते हैं।
शेप क्या होता है इसका? सीसॉ. Then SF6H will be equal to half 6 plus 6 minus 0 plus 0. 12 का half यहाँ पे 6 which is sp3 d2 hybridization. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका एक्सपेक्टेड है और 6 प्लेसेस और एटम्स भी 6 है, तो जो एक्सपेक्टेड है वही एक्चुअल में रहेगा इसका. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर SF6 हाईली स्टेबल होता है. ये रहे शेप ज्योमेट्री स्ट्रक्चर इसके क्वेश्चंस. ड्रॉ कीजिए.